हेलो दोस्तों, दिस इज वजन मोटवानी। वेलकम बैक टू वीडियो। बहुत दिनों बाद आ रहे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे ज़िंदगी में, लेकिन अब वापस आ गए एक बार। तो इस बार जो मचाएंगे। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। रिजल्ट सीजन चालू हो गया है क्वार्टर में। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ पोस्ट किया जाए। बैंक्स, NBFCs और भी बहुत सारे कंपनीज से बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इक्विटास बैंक, IIFL फाइनेंस, यूजुअल स्मॉल फाइनेंस बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स और NBFCs के रिजल्ट्स आ चुके। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, अबाउट द बिजनेस, about the con highlights, and as well as what are the things that we have to consider in a small finance bank. तो शुरू करते हैं। Equitas Small Finance Bank, which can be a future FDFC as well. तो आगे जाने से पहले हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं बैंक्स में, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप बैंक्स को एनालाइज करेंगे। और हमको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से बैंक्स को देखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज ROA, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी इज जनरेटिंग बाय फ्रॉम 100 रुपीज़ रेवेन्यू। 100 रुपये के रेवेन्यू से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, उसको ROA बोलते हैं। द सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ फंड्स, एट विच इंटरेस्ट कंपनी इज बोरिंग मनी। अभी बैंक्स और NBFCs RBI से कुछ परसेंटेज पे, कुछ इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। लेट्स से HDFC ने 3 to 4% पे RBI से लिया, उसके बाद 8 to 9% पे लोन दिया, तो उस 3 to 4% को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज लोन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, एट विच रेट कंपनीज लोन बुक इज ग्रोइंग। किस रेट पे बैंक का लोन ग्रो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लोन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जितना डिपॉजिट करेंगे उतना बैंक के लिए अच्छा है। कासा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी। नंबर ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज फीस, इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एडिशनल कॉस्ट लाइक प्रोसेसिंग फीस, सर्विस फीस, क्रेडिट कार्ड एंड मैनी मोर। क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेट भरते, या फिर कुछ EMI चालू करवाते हम लोग किसी भी फ़ोन खरीदने पे या किस पे भी, तो उस पर जो फीस लगता है। द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस नेट इनकम। ग्रॉस नेट इनकम क्या रहता है? इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रोसेसिंग फीस डिवाइड बाय अदर चार्जेस। इंटरेस्ट इनकम हम आगे बढ़ेंगे जरूर, अभी के लिए देख लीजिए ग्रॉस नेट इनकम, जो कि कंपनी का प्रॉफिट भी हम लोग कह सकते हैं। ग्रॉस नेट इनकम को इक्वल्स टू इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रोसेसिंग फीस डिवाइडेड बाय अदर चार्जेस। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। अब सिंपल टर्म्स में बोला तो रिटर्न इक्विटी, एज ए शेयर होल्डर हम जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते या कंपनी में इन्वेस्ट करते, उस पैसे से कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक बैंक या कंपनी निकाल पाती है, उसको हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहता है? आपका नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज AUM। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रहता है? समझो आपने 100 रुपये डिपॉजिट करवाया बैंक में, ठीक है। उसके बाद वो 100 रुपया लोन दिया बैंक ने किसी और को, उसमें से बैंक ने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया, या फिर हम लोग कह सकते हैं 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट जनरेट किया। उसमें से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे सेविंग अकाउंट पे 3 to 4% रहता है, वैसे ही 10 रुपीज़ में से आपको 4 रुपीज़ दिया जाएगा। दैट इज 4% ऑफ द डिपॉजिट दैट यू हैव मेड, ठीक है। 4 रुपीज़ आपका जो है वो आपको दिया जाएगा, और बाकी जो 6 रुपीज़ है वो कंपनी का, सॉरी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम है। सो नेट इंटरेस्ट इनकम यही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने जो पहले देखा, ये नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय एवरेज AUM। AUM क्या रहता है? आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। आगे चलते हैं अदर इनकम। अदर इनकम आपका लोन प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट ऑफ लोन, लॉकर चार्ज, वो सब, कमीशन ऑन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स पे जो कमीशन मिलता है वो सब, उसको भी हम लोग अदर इनकम में डालेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टोटल इनकम। टोटल इनकम आपका क्या रहता है? नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम।
नेट इंटरेस्ट इनकम हमने ऊपर देखा, जो हमने 6 रुपीज का जो हमने नेट इंटरेस्ट इनकम देखा वो है, और प्लस अदर इनकम जो आपने लोन प्रोसेसिंग फी वो सबको मिला के हम लोग टोटल इनकम बनता है। नेक्स्ट आता है ओपेक्स। ओपेक्स आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ब्रांचेस, पावर कॉस्ट, रेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ऑल द एक्सपेंसेस दैट अ बैंक शुड गेट। उसके बाद आता है आपका टोटल इनकम माइनस ओपेक्स इक्वल्स टू पीपीओपी। पीपीओपी क्या रहता है आपको? प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका जो टोटल इनकम है उसमें से ओपेक्स को अगर माइनस किया जाए तो आपका पीपीओपी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अभी जो पीपीओपी बना दैट इज प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका हम लोग अगर परसेंटेज गिने, ठीक है, उसका सर्टेन परसेंटेज गिने, ठीक है, परसेंट निकाला, प्रोविजनिंग का जो परसेंट निकाला, उसको हम लोग क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं। क्रेडिट कॉस्ट हम लोग सिंपल टर्म से बोले कि आपका अगर समझो कोई ना कोई लोन डिफॉल्ट करता है, उस डिफॉल्ट लोन के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज साइड से रखा जाता है बैंक्स को, तो हम लोग उसको क्रेडिट कॉस्ट बोलते हैं। लोअर द क्रेडिट कॉस्ट बेटर द एसेट क्वालिटी ऑफ अ बैंक। अगेन रिपीटिंग, लोअर द क्रेडिट कॉस्ट बेटर द एसेट क्वालिटी ऑफ अ बैंक। क्रेडिट कॉस्ट का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय जीएनपी। जीएनपी अभी हम लोग पढ़ेंगे, जीएनपी है, एनएनपी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ध्यान देके ये वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ आप बैंक्स को जब भी एनालाइज करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीएनपी। अब जीएनपी है जो देखने से पहले हम लोग ने यहाँ पे 3 बकेट्स बनाए, ठीक है। यहाँ पे SMA 0 वो फर्स्ट बकेट, SMA 1 ये है सेकेंड बकेट, और थर्ड बकेट है SMA 2। अब ये 3 बकेट्स क्या रहते हैं? अभी फर्स्ट बकेट में हमने वो देखे हैं जो लोन रिपेमेंट 30 डेज के अंदर रहते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट बकेट में डालते हैं। समझो किसी ने लोन लिया, 30 डेज के अंदर रिपेमेंट किया, उसको हम लोग SMA 0 बकेट में डालते हैं। सेकेंड बकेट में हम लोग जो जिसने लोन लिया है उसने 30 to 60 डेज में रिपेमेंट किया है, उसको हम लोग SMA 1 में डालेंगे। और जिसने 60 to 90 डेज में लोन रिपेमेंट किया है उसको हम लोग SMA 2 में डालेंगे। अभी जो लोन 90 डेज के ऊपर रहते, ठीक है, उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। जो बैंक्स के लिए कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पाती है, उसको हम लोग GNPA बोलते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जितना कम GNPA उतना बैंक के लिए अच्छा, उतना एसेट क्वालिटी बैंक्स का अच्छा। सो ये 3 बकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझा फिर से वीडियो देखिए। वाई क्रेडिट इज एक्साइटिंग। क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ मिरर्स द GDP ग्रोथ। जितना ज़्यादा बोरिंग होगा उतना ज़्यादा बैंक्स को इंटरेस्ट आएंगे और उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। ओके, तो यंग पॉपुलेशन लीड्स टू राइजिंग GDP ओवर कैपिटल। अभी इंडिया में पॉपुलेशन मैक्सिमम यंग है, तो दिस इज द पावर, दिस इज द पावर टू द वर्ल्ड। अभी यंग पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो GDP पर कैपिटा है वो एस्पिरेशनल तरीके से राइज होएगा, बहुत ही जबरदस्त जम करेगा, ठीक है। जैसे ही जीडीपी पर कैपिटा 2000 USD से ऊपर जाएगा, 2000 5000 के बीच में जाएगा, उसमें हमारा डिस्क्रिशनरी स्पेंस जो है वो हायर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही कोई नया आईफोन लॉन्च होता है या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लॉन्च होता है तो लोग लाइन लेके खड़े हो जाते हैं उधर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डिस्क्रिशनरी स्पेंस। Another one is a lot of credit growth gets fueled by aspirational consumption। ठीक है, हमने वही बात की कि कंजम्पशन जो है यंग पॉपुलेशन है अपना, जेनजी जो है उनको ये चीजें पसंद है। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ गेट्स फ्यूल्ड बाय एस्पिरेशनल कंजम्पशन। और ये भी है कि अपना बैंक्स और जो NBFCs है वो अपने बेंचमार्क इंडाइसेस के मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज 35% इन सेंसेक्स। तो हमने ये देखा कि भाई क्रेडिट क्यों एक्साइटिंग है, क्यों इंपॉर्टेंट है क्रेडिट इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, एक बैंक को ग्रो करने के लिए। तो आगे बढ़ते, तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक NBFC आपका।
तो 2-3 टर्म से ज़्यादा ऐसा टेक्निकलिटी में हम लोग जाएंगे नहीं, 2-3 टर्म से ज़्यादा नहीं है। पहला है आपका CRR SLR। CRR आपका क्या रहता है, कैश रिजर्व रेशियो। सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आपको RBI के साथ रखना पड़ता है फॉर इमरजेंसी, जब आपका कुछ इमरजेंसी है किसी बैंक में, जैसे कि ये बैंक में आया था कुछ साल पहले, तो वो CRR मतलब सर्टेन परसेंटेज आपको रखना पड़ता है। जैसा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में आपको 3% रखना पड़ता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आपका 3 to 3.5 रखना पड़ता है, और NBFC में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आता है आपका कैपिटल एडिक्वेंसी फ्रेमवर्क। कैपिटल एडिक्वेंसी आपको 9% रखना रहता है। अगेन लिक्विड एसेट्स, इसमें भी लिक्विड एसेट्स आपको अलग से साइड से रखने पड़ते हैं फॉर इमरजेंसी एंड इंसॉल्वेंसी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगेन 7.5%, और जो NBFC है उनमें भी 15% रखना पड़ता है। अगेन आते हैं फंडिंग के ऊपर, नो सच रिक्वायरमेंट इन NBFC, डिपॉजिट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है इन NBFC, while the small finance bank primarily depend on deposits। टर्म डिपॉजिट कासा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक से, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कासा। उसके बाद आपका आता है ANBC। ANBC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये बैंक के लिए, तो हम लोग इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हो पूरा शीट दिया हुआ है यहाँ पे। आगे चलते कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जरूरत ही क्यों पड़ी, इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों है? तो RBI felt that the priority sector like farmers, those living in villages and dairy etc. underserved. Small finance bank licenses were introduced to NBFCs। तो RBI को लगा कि भाई जो अंडरसर्व पीपल है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको लोन कौन देगा। उनको लोन देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस इशू कर दिए गए। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले एक NBFC था, इक्विटास होल्डिंग्स करके, उसके बाद डीमर्ज हुआ, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की जरूरत थी। बिजनेस मोटो क्या है? बिजनेस मोटो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन मसल ऑफ एन NBFC इन कॉस्ट ऑफ फंड्स। आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा ज़्यादा रहता है NBFCs में, लेकिन वो इनकम जनरेट कर पाता है। दिस एंश्योर द लोअर कॉस्ट ऑफ लोन्स फॉर एंड बोरर इन टायर 3-4-5 सिटीज। तो 3-4-5 सिटीज में जिसमें अंडरसर्व्ड है, अपना रूरल पॉपुलेशन है, 70% ऑफ पीपल उधर रहते हैं, तो उनको लोन देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक से लाइसेंस अगेन इशू कर दिया गया। The advances for small finance banks have grown at a compounded annual growth of 42% in last 5 years। एडवांसेस मतलब आपका जो लोन देते हैं आप, उसको हम लोग एडवांसेस बोलते हैं। डिपॉजिट्स हैव ग्रोन एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 40% इन लास्ट 5 years। लायबिलिटी मार्केट शेयर हैज ग्रोन फ्रॉम 0.2 to 0.8%। ठीक है, और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे इंडिया में, उसमें से 2 सिर्फ सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब क्या? कोलेटरलाइज्ड। ओके, तो आप बताइए कौन से 2 है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इसमें सिक्योर्ड लोन से? तो मैं पहला हिंट दे देता हूँ, देखिए फर्स्ट है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और सेकेंड वन आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही जान देंगे। उसके बाद आते हैं मेजर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं उसके। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, इंडिविजुअल इनकम जनरेटिंग लोन, एफोर्डेबल हाउसिंग लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम हमने पहले देखा कि क्या रहता है। कॉस्ट टू इनकम इज यूजुअली net worth of 60% एज इट्स हाई ओपेक्स कैटेगरी। ओपेक्स हमने देखा कि आपका कॉस्ट वगैरह हाई रहता है NBFC को सेटअप करने में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, बट वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड कि एक बैंक में वैल्यू ऐड क्या करता है। ठीक है, वैल्यू ऐड ऐसा करता है कि आपका ROA और ROE अगर इंक्रीमेंटली ग्रो करता है तो वो बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आपका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर बैंक कोई होलसेल डिपॉजिट से अगर रिटेल डिपॉजिट पे जाता है तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स टू बैंक ग्रो। अनदर रीजन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ग्रो इज द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर Equitas small finance bank have। So why Equitas small finance bank? Equitas small finance बैंक है क्या? Equitas small finance बैंक अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमने SMA1 SMA2 के मूवमेंट के बारे में बताया कि SMA1 क्या रहता है
और SMA2 का रहता है। एक ट्रांजिशन आया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिसमें GNPA अचानक से घट गए, NNPA अचानक से घट गए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से NPA 4% से 2.6% पे आ गए इन March 22 टू March 23। उसके बाद आपका NNPA 2.37% से 1.14% पे आ गया। और रिस्ट्रक्चर बुक मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करें, किस तरह से इनका जो लोन बुक था वो 80% जो था वो अनसिक्योर्ड था। अनसिक्योर्ड मतलब कैसा, माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी था, कोलेटराइज नहीं था, अंडर सर्व लोगों को ज़्यादा दे रहे थे, तो इसके वजह से देयर इज अ रिस्क इन द बैंक। सो दिस वाज द वन ऑफ द रीजन कि उनका अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड में गए। लेकिन अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड में गए तो हम लोग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हो गए। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों कम हो गए। तो दिस वाज एन एसेट क्वालिटी जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया। कोविड से जो इम्पैक्ट हुआ था वो बैक टू नॉर्मल हो गया। उसके बाद आपका हमने जो बात किया, ग्रॉस NPA, नेट NPA, नेट प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा बैक टू नॉर्मल हो गया। 4.82% से 4.39% हो गया आपका ग्रॉस NPA, और नेट NPA 2.38 से 2.38 कांस्टेंट रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स। दिस इज 2021 एंड 2020 डेटा। उसके बाद मिक्स चेंज या प्रोडक्ट मिक्स चेंज में पहले बात कर रहा था। प्रोडक्ट मिक्स चेंज ने क्या हेल्प किया है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो ड्यूरिंग मोनेटाइजेशन 53% ऑफ एडवांसेस representing microfinance was impacted while the rest of the book had no impact। जी, हमने वो बात किया कि डिमोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, माइक्रो फाइनेंस मतलब आपका जो नॉन कोलेटरलाइज रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। और ROA जो था, रिटर्न ऑन एसेट, आपका जो लोवेस्ट लेवल 0.3% हुआ फॉर द ईयर एंडेड March 2018। During COVID-19, the entire advances was impacted, and yet the lowest level of our ROA went down to was 1.1% for the year ended March 22। क्यों हुआ ये हुआ प्रोडक्ट मिक्स से। आपने अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लोन में गए, आपका जो 53% था अभी वो 18% पे आ गया आपका माइक्रो फाइनेंस। हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरह से कितना प्रोडक्ट मिक्स है, कौन से किसमें है। लेकिन दिस वाज अ चेंज दैट Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक मैनेजमेंट has taken over after demonetization impact। It took us 7 quarters to get the over 2% annualized ROA। अभी अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स में भी देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली 2% से ज़्यादा ROA डिलीवर कर पा रही है बैंक। आफ्टर COVID-19 impact it has taken us just 3 quarters to get over 2% ROA for the quarter। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FY17 से FY22 तक किस तरह से एडवांसेस ग्रो हुए, ROA किस तरह से एकदम 2% से ज़्यादा अच्छी तरह से हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अपना लोन बुक जो है ग्रो कर पाया। लोन बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस आर साइकिल्स ऑफ अ बैंक। अगेन एक बैंक में साइकिल्स जो आती जाती रहती है। अगेन दिस इज द नॉट एन रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट वी आर डूइंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो इंडिया में टोटल 6 प्लेयर्स 84% इंडस्ट्री एडवांसेस को कंट्रोल करते हैं, उसमें 34% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को है, जिसमें सिक्योर्ड, अगेन हमने बात किया सिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें 15% है, उज्जीवन 11%, और बाकी जो है 10% या 10% से नीचे है। सो दिस इज द जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। They are majorly present in Tamil Nadu. 333 branches have been placed in Tamil Nadu. While the advances are be coming from Tamil Nadu, only 50% of the advances are been coming from Tamil Nadu, and 29% of the deposits are been coming from Tamil Nadu. They are also focusing on other states as well, investing heavily and expanding as well. Moving on, as I said, they are expanding, so they are invested in RCB and the Gujarat Titans to have more branches in Bangalore and Gujarat to have more customers and more deposits as well. The customers they have is micro entrepreneurs, proprietorships, mass and mass affluent individuals,
small road transporters, NBFCs and women. I think so. Women are also one of the biggest customers of Equitas Small Finance Bank. So these are the things. Small road transporters consist of the truck drivers, cab drivers, Ola, Uber, Rapido, and all the transporters. So they took loan on a fixed loan basis, on a 5-year basis, which is again one of the good things for Equitas Small Finance Bank. Moving ahead, in digital banking, they are also expanding in digital banking. In neo banking, they have a NeoX, which is a debit card which has 601 crore total deposits, and in digital products as well, they have prepaid cards, micro ATM. They are also providing FASTag, UPI, which is where the income is being generated, and the income will be the other income. Okay, the prepaid card consists of 18,000 plus transactions, micro ATM 80 Rolex plus transactions, FASTag 45,000 plus new FASTags have been issued, and UPI consists of 30 crores plus transactions have been processed from Equitas Small Finance Bank. Moving ahead, asset portfolio consisting of the asset portfolio. The asset portfolio offers a range of solutions from small business loans, vehicle finance, microfinance, housing finance, MSC finance, and NBFC financing, designed to provide credit to informal segments. Asset quality trend consists asset quality trend. The GNP and NNP have been lowering down from the last few quarters. Lower the GNPA, better is the asset quality. I'm saying again and again. Lower the GNPA, better is the asset quality. You can see the GNP and NNP has been falling from 3.82% to 2.12%. So moving ahead, we will see the products that Equitas Small Finance Bank has been offering to its customers. Vehicle finance. Equitas Small Finance Bank offers the vehicle finance loans to those who have prior experience in logistics and managing small fleets. So they are focusing on people who have experience in handling the logistics department, handling an experience of driving a vehicle. Commercial vehicle industry has seen a growth of over 3% quarter on quarter, and demand remains stronger. The focus continues to be on LCV and small commercial vehicle in the used commercial vehicle segment, and on small commercial vehicle segment, the new CV segment. So companies basically are focusing on vehicle, that is commercial vehicle, which is growing 25% year on year. So if we see the Q2 FY24 highlights, number of live loans is 2,21,000, average ticket size 5 lakh, GNP at 2.43%, and PCR 62.75%. What the PCR is? The PCR is provision coverage ratio. It is the total income divided by GNP. Again, the lower the GNP, better will be the PCR, better will be the earnings of the bank. Housing finance. Equitas Small Finance Bank focuses on customers that are looking for their own property. अगेन जो अपना नया घर लेना चाहते हैं, अगेन धनतेरस आ रहा है तो धनतेरस पे नए लोग कुछ ना कुछ नया घर लेते, नई गाड़ी लेते. So Equitas Small Finance Bank focuses on them. So the highlights, Q2 FY24 highlights, number of live loans they have is 36,000, average ticket size is 11 lakhs, GNPA is 2.86%, and PCR is 29%. Moving on to the microfinance has been growing 19% in this quarter, and it is one of the, I think so, favorable segment for all the banks because it is growing rapidly. Mainly Equitas Small Finance Bank primarily focus on low income generating groups to kickstart their business operations. In this, they consist of auto walas, doodh wala, chai wala. All these people, they cater it, while also empowering women at the forefront to develop new ventures. They also have 100% paper loan disbursement process in the segment. So if we see the highlights of this quarter, number of live loans they have 20 lakhs, average ticket size 49,000, GNP at 2.72%, and PCR is higher. Again, I am saying because it's one of the growing segment, that is why PCR is high, 81%. MSC Finance. Equitas Small Finance Bank reach out to enterprises that require working capital to fund their operation. Again, what is a working capital? माल खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए. उस पैसे को फंड करने के लिए Equitas Small Finance Bank loans देता है. So MSC Finance have been struggling from last 3 years as well. The banks have loans, non-performing assets from MSC Finance. Like Bank of Baroda have 10,000 crore of NPAs from MSC Finance, which will be covered in next few quarters.
In Equitas Small Finance Bank, there were little bit of live loans, like 2005 is the live loans, number of live loans. Average ticket size 74 lakhs. GNP 6.95%, again is a higher. PCR 68.97%. Why the GNP is higher? Because the loan will be repaid after 90 days. So that is why the GNP has been on a higher side. PCR 68.97%. Small business loans. Again, Equitas Small Finance Bank have been focusing on small business loans. This is the new segment they have added, that is small business loans. They have been mainly addressing the large unmet financing needs of unbanked and underbanked entrepreneurs. Like I would give an example: if an college student passes from the college and have an idea of opening a business, he don't have a money, but he have a plan. So Equita Small Finance Bank give loans to that underbanked entrepreneur and on a higher interest as well. So that is why the average ticket size is 6 lakhs and number of live loans is 2 lakh 56,000. So these are some of the highlights of small business loans. The advances in small business loans have been growing 32% year on year to 11,550 crore. And small business loan touched on growing the non-Tamil Nadu business continues. Non-Tamil Nadu disbursements were at 42% for the quarter, as against 39% for the first quarter. So they are basically focusing on states that are non-Tamil Nadu. As we've been saying in the geographical presence, that the most of the branches are from Tamil Nadu. So basically, dependent on one state is very, very risky for any bank. So they are been expanding. They are expanding geographically. They are expanding in asset quality as well. They are expanding in products as well. These are the things that increases the ROI and ROE of a bank, that will increase the earnings of a bank. So you have to connect the points of all the things, and you have to analyze the businesses in this way. The business has been seeing growth in states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Maharashtra. So moving ahead, the financial glance of this quarter, what they have done in this quarter. So daily average cost of funds. Again, we have discussed what is the cost of funds, कितने interest पे RBI से लोन लेते हैं या किसी NBFC से लोन लेते हैं, that is the cost of funds. Higher is the cost of funds. Why the higher is the cost of funds? Because interest rate have been rising, that is the higher cost of funds. Net interest margin has been lower. Why net interest margin has been lower? Because of the OPEX. They have been investing in digital products, digital banking. That is where the names have been compressed. And they have been drifting from unsecured to secured as well. That is also the reason the names have been depressed. This is the important point why the names have been depressed. Moving ahead, cost to assets have been lower. We have discussed why the cost of assets have been lower because of the OPEX they have been doing. ROI has been consistently good from last 4 quarters, 2%, exceptionally good. Credit cost has been lower, which is concern in last few quarters. It's been good in this quarter. Going down, GNP and NNP, again we have been seeing the trend of asset quality. GNP and NNP has been decreasing, which is one of the good sign as well. Provision coverage ratio, again, is constant. ROE less than 15%, which is a little bit of concern, but we have to see that 15% is also little bit less than 15%. But we have to see that if the bank has 1.5% of ROE, okay, and the 15% of ROE, so it is a gold mine for a bank. मतलब आपको खजाना मिल गया. We would see how we have to value that bank. For a bank have 1.5% of ROE and 15% of ROE, we would see that. But you have to consider that is a gold mine. Profit and loss being and net interest income have been grown by 26% year on year and 3% quarter on quarter. OPEX have been grown because they have been investing in technology and new products. Pre-provisioning profit has been grown 36%. PAT has been at 998 crores for this quarter. ROA and ROE have discussed that 2% and 14.6%. Financial performance, GNP has been decreasing and NNP has been improved by 102 basis points.
and additional provisions of 28 crores have been made to strengthen coverage. Slippages have been neutral for this quarter, that is at 3.47%. On call highlights what the management is saying to its shareholders, to the investors in this quarter. On the macro level, favorable environment, resilient GDP growth, all the factors are quite healthy. Upcoming festival season, so very strong demand in all segments. So India is growing very, very good. India is growing at macro level very good. All the things are good in this festive season. All the people will buy on the terrace and all the things will happen. That will be a push for the economy. So the next thing is NIMs to be moderate and remain under guidance. So why we have discussed that? Because going from unsecured to secured, that is, the NIMs has been decreasing. For the small business loans, they are focusing on Tamil Nadu states like Telangana, Maharashtra, and Karnataka. However, for ROE, they expect the cost of funds to move on to about 7.5% in the next 2 quarters from current 7.2%. They expect interest cost to go up by 25 basis points in the second half as older deposit gets repriced. So again, the another points they have been covering is ROA 2.25% is the long-term guidance. Excellent as a business model. Sourcing makes portfolio quality strong, and some investments in technology. We are confident of achieving it. So these are the guidance they have been giving for the next few quarters on the next year. OPEX have been grown up sharply in the first quarter because salary hikes are done in this quarter. So they have increased the salaries of the employees. That is why the OPEX have been there. And that is why the total income that we are seeing is a little bit lower. And Equitas staff cost make up 65% of total OPEX. So OPEX they are reduced in the next 3 quarters. So they are saying the OPEX will reduce in the next 3 quarters as they will not hike on quarter, but only the first quarter of the year. So that is why the OPEX would reduce in the next 3 quarters. So 85% of the book is fixed rate. What does it mean? Means आपने 85% of the loan जो है एकदम फिक्स रेट पे दिया है. अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जाते हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, पर नीचे भी जाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है. So this is a good thing. If we assume the cost of funds remains the same for the next 12 months, our NIM will expand. As our fixed rate books get repriced at higher level, as interest rates were raised only in this Q2. So bottom line will improve. So these are the things they have been saying. Plans on branch opening, they will not add any branches because they have been adding from last 5 to 7 years. They will invest in technology. They will get profitability from credit cards as well. While the housing finance will be break even for next year, but will contribute in next few quarters. The guidance for PCR for 2-year time frame to reach 70%, which is now 57%. It is good. So according to me, what are the key focus that we have to see for next few quarters? ROA consistency of more than 2%. Why I am saying this? I will be doing the technical and fundamental analysis. So I would say this. Moving ahead, geographical expansion out of non-Tamil Nadu states. This is one of the things we have to see. Growth from small business loans and commercial vehicle segment. So these are the things we have to consider. Moving ahead. So this is the technical chart of Equitas Small Finance Bank. So if you see, there was minor support in 82 where the bank goes higher than उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया. So what we will see is that maybe they will consolidate here only between 100 and 82 or can break from 100 as well. So we have to see technically as well where they will come. So this is the technical part. Moving to the fundamental part or valuations part. So if we see here Equitas Small Finance Bank, so in other दूसरी कंपनीज में हम लोग मोस्टली स्टॉक पी को देखते हैं, इट इज प्राइस टू अर्निंग्स, बट इन दिस बैंक्स वी वुड सी द बुक वैल्यू, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू. सो अगर आपका ROA 2% से ज़्यादा है, 15% के आसपास आपका ROA है, तो जनरली आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4 to 5 होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए? क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखेंगे तो दे हैव an ROA of 2%. It is being lower in last few quarters, but has been consistently of 2% and ROA 15%. They have price to book value of 4. Okay, book value is 165 and price to book value of 4. So if we consider for Equitas small finance bank, and if we consider the price to book value of 4, and now the current price is 94 into 4, so sorry, book value is 46. It the screener doesn't have the exact book value. You have to go to the presentation to get the exact book value. It is 49 now. It is अभी यहाँ पे wrong लिखा हुआ है, तो 49 है. 49 into 4 would be around 200. If we consider the market would value that we can get the 200 rupees stock price. Again, it is not a recommendation. It is for education purposes. अगर वो 2% से ज़्यादा ROA कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, किसी क्वार्टर में 2% से ज़्यादा ROA नहीं आता है, तो stock price can fail and we can go wrong. So this is the valuation framework. It is at good valuation, price to book value of 4, and if it can go to 5 price to book value over the period of time, if we consider the 2% ROA and going geographically good. So these are the things we have to consider. So that was for the video. If आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखिए. बहुत मेहनत रखी है वीडियो बनाने में, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद एनालिसिस कीजिए. नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिए, लेकिन आप एनालिसिस कीजिए, दूसरे बैंक्स में एनालिसिस कीजिए. देन फैंटास्टिक रिजल्ट्स. आई विल ऑल्सो कवर फ्यू ऑफ द बैंक्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल. तो थैंक यू वेरी मच, और अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिए. अभी यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, यू हैव बिकम एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नाउ. So pat your back and thank you very much, and see you in another video.